Your channel again. Good morning. So abhi I'm going to explore this place. It's around 7:30. कल रात में I was not able to record just because मेरा कैमरा और फ़ोन दोनों का बैटरी डेड हो गया था. So let's go. So I is and it's a very beautiful place. If you guys see my background, and a friend of mine who helped me to reach here right here. So basically this is a place which is top of the Jodhpur and you'll be able to see all over the Jodhpur from here. आपका उसने बंद कर दिया, मैं क्या ही बोलूँगा. Place where the sunrise is visible and it's basically for the sunrise and sunset point only. No one knows about this. I just been with my friend of Jodhpur, so that's the reason I'm able to find it out. Now you can see. Look, it's very pretty. It's very pretty. I didn't knew that I would be able to visit this place because once you ask anyone, no one will let you know about this one. And seriously, I didn't knew कि जितना ऊपर चढ़ना was tough, नीचे उतरना भी उतना ही tough है क्योंकि if you see the heat over there, Rajasthan is always known for the heat, you know right? So अभी इतने नीचे जाना है मुझे. Look. I'm going to show you what I'm going to have. Are you guys ready? Alright guys, so आज सुबह मैंने आपको कुछ व्यूज दिखाए हैं जोधपुर के. अभी मेन जो है हमारा एक्सप्लोर अभी होगा एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस प्लेस. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उमन भवन करके, वो अभी क्लोज है तो अभी मेरे को पता नहीं कि मेरे को ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगा कि नहीं. स्टिल जो भी देखने को मिलेगा मैं तो आपको ज़रूर ही दिखाऊंगी. और मैं यहाँ से शायद वॉक करके जाने वाली हूँ. आप देखो आगे आगे मैं वॉक करके जाती हूँ या ऑटो लेते हैं या क्या लेते हैं. लेट्स गो, स्टे ट्यून. सो वी आर ऑन द वे और यहाँ से सीधा जाना है तो वी विल रीच देयर. So till then, stay tuned with HAWAHAWAI and catch me everywhere you can. Walk a lot like if you thak jaoge then you will be living, you know that you have to walk a lot and you would be tired though, but your food dekhne ke baad na you will be like, oh my god, I need to walk a lot. Look at where I came from. I need to walk a lot. उसके बाद you will reach in between मेरे को बैठना पड़ा. You can't बैठ रहे फिर ये बहुत ऊंचा है यार, कैसे नहीं पड़ा.
अब मैंने मतलब ये जो फोर्ट है वो एंट्री किया है एंड यूल सी बिहाइंड मी इट्स लाइक थोड़ा स्लोप है तो यूल सी द डेप्थ एंड इट्स वेरी हाई so you have to walk again and again and then you'll reach that view which you're waiting for. So let's up. Yeah guys, can you see this? Can you see the behind scene and this hole? I try to record it from every single angle and every single point. ये बेसिकली इनसाइड सीन है जिसमें सबसे ज़्यादा सीनरी था इनका और द डिज़ाइन यू विल सी इज़ द सबसे जो वो बोलते हैं ना टफ वाला जो विच इज़ वेरी नैरो एंड वेरी डीप काइंड ऑफ थिंग. आई ट्राई टू शो यू गाइस. तो अभी बेसिकली ऐसा है कि मैंने मतलब एक जो ऐसे राजा रानी जहाँ पे रहते थे बेसिकली उसके अंदर एंट्री किया है. तो अभी इसका ऊपर का सीन विल सी लुक लाइक इट इज़ टोटली सराउंडेड. मेरा प्लान बेसिकली अब ऐसा है कि मैं अब यहाँ से शायद निकलूँगी तो आप मुझे यहाँ से निकलते हुए देखने वाले हैं आप. I don't know the name actually. Stay tuned with HAWAHAWAI. Meter away from here, so I took this road.
अब यहाँ पहुँचने के बाद मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको फ़ोन्स अंदर अलाउड नहीं होते, बट फिर भी मैंने छुपके किया। फ्रैंकली स्पीकिंग अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे अंदर स्टैमिना भी नहीं बचा, तो मैंने एक ऑटो लिया और हम कहाँ जा रहे हैं, जिप्सी जाएंगे हम, ताकि मैं खाना खा पाऊँ, क्योंकि जिप्सी का खाना मैंने सुना है इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी पॉपुलर, सो यू शुड ट्राई इट एज वेल। तो बेसिकली अब हम फोर्ट में एंटर कर रहे हैं। आई विल गो इनसाइड एंड आई विल शो यू गाइस कि मतलब पूरा इंटरनली ये कैसा दिखता है। Stay tuned. अब बताऊँ मैं खाने जाने वाली थी, बट बीच में मुझे ये एरिया दिख गया और मेरे ऑटो वाले ने बोला मैम यू शुड ट्राई इट, तो मैंने सोचा चलो देख ही लेते हैं। और ये बहुत ही सुंदर है, लाइक इट वाज ब्यूटीफुल, लाइक आई वुड हैव लॉस्ट इट बट मुझे मिल गया है। तो अब मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं बीच में ही भटक के कहीं भी चली जाती हूँ, सो आप लोगों को मेरे साथ ही रहना है। We are about to see this clock tower. There is a place nearby to this hostel. आपको सुनने से लगता है कि सूखा होगा पाइनएप्पल है, इसका नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए जब रहेगा नाम बोलूँगी यहाँ पे मैं बैठने वाली। Was the end of this trip, so I'm about to go to the next destination, which you will be able to see while this auto ride ends. So see you guys soon. Thank you so much.